Hi everyone, welcome back to my channel Fahming Nabi. So today after a long time I did a makeup tutorial for you guys and यही वो makeup है जो मैंने show किया है. It really took me 11 minutes to complete the whole makeup, although मैंने edit करके उसको 3.5 मिनट में लेकर आए. But the products that I've used is from Swiss Beauty. Now this is not a sponsored video. Basically I went to Siliguri and from Hong Kong Bazaar, Hong Kong Market. वहाँ से मैंने कुछ products उठाए थे and it's been like I think more than a month that I've picked this product and मुझे वक्त ही नहीं मिल रहा था कि मैं film करूँ. So these are the 3 face products which I picked and today's video is all about these 3 products and this is like a first impression about this product. Now Swiss Beauty बहुत ही affordable products बनाते हैं. Now I'm not going to say you the price of this products because ये products एक जगह में एक different price में मिलती है. Yes, like अगर आप Swiss Beauty Amazon से ले रहे हो तो अलग price, अगर आप Swiss Beauty फ्लिपकार्ट से ले रहे हो तो एक प्राइस, अगर आप दुकान में जाओगे तो डिफरेंट प्राइस, अगर नायका से आप ले रहे हो देन अगेन यू विल फाइंड दैट इट्स लाइक एक अलग ही डिस्काउंट एंड प्राइस मिल रही है एंड हांगकांग बाजार में बहुत डिस्काउंट मुझे मिला था. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई यूज टुडे इज एक्चुअली दिस स्विस ब्यूटी स्कल्प्ट लिफ्ट कंटूर पैलेट. तो ये पैलेट मुझे ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा लगा. इट्स लाइक वेरी पॉकेट फ्रेंडली. डेफिनेटली स्विस ब्यूटी के सारे प्रोडक्ट्स पॉकेट फ्रेंडली होते हैं एंड दिस इज इन द शेड 02. ओके, एंड this is the one. Now out of all 3 products I have to say this is a must product. This is the best product that I picked up because इनकी जो bronzers है they are very pigmented, so be very careful while applying it क्योंकि पहली बार मैं जब लगा रही थी so मुझे पता नहीं था, so it was like oh my god इतना ज़्यादा कलर आ चुका है and I thought I'll look like a fool, but इसमें blendability इतनी अच्छी तरह से होती है कि even if you apply a little bit more then you can just blend this up. Okay, and it comes with I think it's a face powder kind of powder, but it's a little bit dark for me so I haven't applied this one. And this is the highlighter. The highlighter इसकी बहुत ही सुंदर कलर because this is a golden highlighter. Okay, color एक है golden color which is suitable for all the Indian skin tones and it's a very subtle highlighter. It's not that कि आपके मुंह में ऐसा होगा ना कि एक बहुत सारा कलर्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं. बहुत ही सटल है. मैं आपसे बात करते करते थोड़ा और लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे कैमरा में पता है बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है आप लोगों को, बट आई कैन सी व्हेन आई एम लुकिंग एट द मिरर. But it's a very subtle highlighter. Okay, and it's blendable also and it's buildable also. Okay, so ऐसा कोई नहीं है chunky like materials नहीं है, glitters नहीं है. It looks very sophisticated when you apply this and this is the one I'll highly suggest you to go for this palette. It's a beautiful wonderful palette. Now the next product that again you can try and I'm again impressed is this face palette which has kind of all kinds of blush shades, like starting from the pinks, the mauves, and there are some warm tones, some neutral tones. These are so beautiful. Like it will cover all skin tones basically. Even if you have a dark skin tone you can go for this. The medium, and the lighter fairer skin tones, definitely it will look good and it comes with a beautiful highlighter. Now this one is a champagne color highlighter. Again it's a beautiful highlighter but it is like very subtle and it's not going to look like a disco ball. So everyday purpose के लिए भी आप इसको लगा सकते हो. Guys, I really apologize कि बाहर यूटेंसिल्स की आवाज़ आ रही है because the kitchen is just back. ये जो आप कार्डबोर्ड से बना हुआ है जो पार्टीशन एंड इसके पीछे ही किचन है. चाहे मैं कितना भी कहूँ आवाज़ आ ही जाती है. Anyway, so this is the highlighter. Like you can see it's soft, it's subtle, it's very beautiful. It looks cool, it looks nice and I must say oh my god, the blush shades are so pretty. Like I have so many high-end makeup products and this one I am amazed. Now this particular shade basically you can use as a contour actually, bronzer की तरह, and this one has a little bit sheen. Again you can use as a bronzer, but this one is not a bronzer but it's a cool tone kind of I will not say cool tone, it's a neutral tone blush which is very difficult to find कि आप ब्लश भी लगाओ एंड पता भी ना चले. ये इस तरह की है बट बहुत ही हल्का है. ओके, सो दिस वन ब्लशर रियली लुक्स प्रिटी आई थिंक ऑन fairer skin tone. I think darker skin tone people will have trouble in showing up
like this one, but like fair and medium skin tone can definitely go for this blush. It's a everyday blush, especially अगर आप उन professions में हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेकअप करना अलाउ नहीं है, like if you're a teacher, if you're a professor, if you're a doctor, you know, this is the profession which people don't expect you to come and see you in lots of makeup. like हल्का सा मेकअप कर सकते हो, तो तब ये ब्लशर आप लगा के जाओगे तो you know there will be something on your face, but it's not very visible, it's not very overpowering also. And the last product is definitely जो eye look मैंने create किया है, this one, this mauvey shades just जहाँ पे pinks and mauves. So this one is the eyeshadow palette. This is the ultimate shadow palette. ये है 01 and it's written ultimate, probably the name of this palette is ultimate. Okay, the mattes are absolutely, I mean क्या कहूँ, I mean they perform so well, they're so pigmented. Even the, you know, the shimmer shades are also pigmented, but this particular shade I really had trouble showing up on my lids. I really had to go like 5-6 times with ऐसे press कर करके इसको लगा रही थी. I prefer my fingers to apply, you know, these kind of shades. and आप देख सकते हो ये बहुत ही hard pressed है, probably that's the reason. अगर ऊपर का अगर चला जाए तो हो सकता है ये और pigmented हो जाए, but this particular pink shade which is like at the inner corners of my eyes, यहाँ से लेकर मैंने यहाँ तक लगाया, this is very pigmented. ये बहुत ही आसान था लगाने में, and you can see the pop of color and the shine. This one I haven't applied, okay, so I cannot tell you much, but these three shades perform really well, okay. And this particular shade you can apply as a, you know, to fill up your brows also, I feel that. and ये आपको as a eyeliner भी आप लगा सकते हो, like you know the little bit of eyeliner लगा के भी smudge कर सकते हो इस shade से. You can create a smoky brown look also with this shade, apart from creating a burgundies and pink like जिस तरह से मैंने लुक क्रिएट किया है, बिकॉज इट्स लाइक आप इसको एंड तीनों को एज अ शेड यूज़ करके आप एक लुक क्रिएट कर सकते हो. इट्स हैंडी, बट आई एम नॉट दैट सेटिस्फाइड बिकॉज वो पर्टिकुलर शेड परफॉर्म नहीं कर रहा था, सो आई वॉज डिसहार्टन. आई थिंक कि इस तरह से पैलेट मार्स के भी है, पॉकेट पर्स कुछ इस तरह से उसका नाम है, मेरे पास वो पैलेट भी है एंड आई यूज दैट पैलेट. आई थिंक दैट वन इज much pigmented, much better than this one, so you can skip this palette. लेकिन मैथ्स वर लाइक रियली नाइस. ओके, सो इतना ही मैं कहूँगी आज के इस वीडियो में. अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली शेयर करना, लाइक करना. बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए गिव अवे लाऊंगी, दैट इज़ फ्रॉम जून के पहले हफ्ते में. मैं फिक्स कर रही हूँ कि क्या क्या प्रोडक्ट्स रखूँगी गिव अवे के लिए. सो येस, आई नो इट्स बिन सो लॉन्ग. बेसिकली मेरा वॉइस बॉक्स में प्रॉब्लम्स आ चुका है, सो वीडियोज़ नहीं कर पा रही हूँ. इफ़ आई टॉक टू मच, इवन थोड़ा सा भी बात करती हूँ तो वॉइस में बहुत ज़्यादा पेन आ जाती है. सो दैट्स द रीज़न आई हैव बीन टोल्ड कि अभी 1 महीने के लिए आप वीडियोस मतलब मत करो, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं है. लेकिन मैं बहुत कम वीडियोस बना रही हूँ इसलिए, इस वजह से. बट आई रियली लाइक क्रिएटिंग दिस वीडियो बिकॉज आई लव मेकअप एंड आई नो यू गाइज लव मेकअप लाइक मी ऑल्सो. सो आई लव यू गाइज. आई मीट यू गाइज अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो. सो टिल देन टेक केयर एंड बाय.